which is basically used by human beings. Okay, so it is just a systematic, because in NLP or in natural language understanding, human language is the main thing which is basically fit to the NLP system, or that is NLS, that is natural language system. So human language is generally analyzed by the concept of linguistic knowledge. So the one thing that is human language is generally fit to the NLP system, so that processing of the data, processing of the actual text data can be done for the special purpose, like we can categorize the data, we can categorize the text data. Like I've already given one example of Twitter data, means sentiment analysis. So we can easily analyze the sentiments on the basis of the comment which is basically mentioned by the user on any post, or any Twitter post, or any Facebook post. So that language is known as human language, and this language, this data is basically fed to the system. Then after that we are going to analyze the concept of the, then after that we are going to analyze the sentiments of the users. So next thing, the natural language understanding, there is one more concept, NLU, natural language understanding. It has some kind of knowledge. Suppose if we are using some kind of word, I have already given one example of Twitter post. Last day we have just discussed the concept of Twitter post. So there are different kinds of posts, like different kinds of comment, different kinds of review of different kinds of users. So in that situation, how we will analyze, is any review is positive or negative or neutral? So in that situation, we will analyze the word. The user have mentioned the word. What is the actual meaning of that word? So that is the main thing. That thing is basically analyzed by the natural language understanding. It's just a system and nothing else. It's just a system where we need to analyze different kinds of knowledge. The knowledge about what the word meaning, which is basically mentioned by the user. Okay. Then after that, how words combine to form sentences. Means if user is mentioning more than one words or more than two words, so how these words are combined to form sentences. Okay. The last thing is that how word meanings are combined to form sentences which is meaningful, and so on. So suppose if I'm mentioning if I'm getting some kind of review for a movie, so in that situation, if a user mentioning the movie was not good, so this is the word not good. Not good means it is the negative comment. Okay. Then after that, how these words are combined, the movie means it is basically working in the context of movie review, because the movie word is mentioned there. So this is how words are combined to form sentences. Then after that, how words combined to form sentences means there is one, that thing is basically the review of the movie. Okay. So the thing is that knowledge requirements is, in knowledge requirement we basically need to focus on the concept natural language understanding, where we can analyze the meaning of the word, how the sentences are arranged, how the words are arranged to form the sentence, and how these words are meaningful to the sentence which is basically mentioned in any review or any kind of Twitter post. So this is the concept of natural language understanding. The next scenario is there are different kinds of natural language understanding. There are different scenarios. Okay. So the first thing is phonetics and phonological knowledge. Then after that, that is morphological knowledge. So these are the knowledge which is basically need to analyze the concept of natural language understanding. अगर हम किसी भी सिस्टम को, just wait. Suppose if you are training a system as natural for processing the natural language data, to process the natural language data, so that system has some kind of knowledge. That system must have phonetic knowledge. That system must have morphological knowledge. That system must have syntactical knowledge. That system must have semantic knowledge. And there are many more knowledges that is basically required in that system, which is basically used to perform natural language processing, because there is one more concept, natural language understanding. So whenever we are going to process the natural language, so that system should be
different kinds of understanding, and this understanding can be done with the help of different types of elements. And the elements which I have already mentioned means that element is phonetic elements, morphological elements, syntactical elements, semantic elements, pragmatic elements. So these are the elements which is basically used in natural language understanding. It's not a part of natural language processing, it's a system. Natural language understanding is a system which is basically used to analyze the concept of natural language, which is basically used to perform the concept of natural language processing. And that system must have all these properties. So there will be some kind of knowledge of that system. On the basis of that, on the basis of the knowledge the system which basically hold, so on the basis of that thing we are going to analyze the text, which is text data. We are going to analyze the text classification. We are going to analyze the document classification. So this is the term. Now the thing, what is phonetics? Actually, the phonetics is nothing. It is just sounds, the sounds of a human being. Suppose if we are talking, so there is some kind of sounds. हम जो बात कर रहे हैं उस बात का जो एक साउंड आ रहा है, जो एक आवाज आ रही है, that is called phonetics. It is just a sound that is basically used by human being. For which purpose? To communicate with one another or to communicate with other person. So this is the phonetics. Okay, so phonetics is just, it is nothing, it is just a sound that is basically used by the human being for communication purpose. So this term is known as phonetics. It also describes the physical forms of sounds, how the sounds are produced, how it can be heard, and how it can be described. Means if a person is talking something, so how this words are produced, how another person is able to heard that word, and how the speaker will explain this word. So this is the phonetics. Next is morphological knowledge. Morphological knowledge is also an important part in natural language understanding, because in natural language understanding, in natural language processing, we need natural language understanding system, and that system should have different kind of knowledge. So system needs phonetic knowledge. Phonetic knowledge is a very important part. Whenever, like I'm just giving one example, whenever we are talking, whenever we are asking some query on Google Assistant, so how Google Assistant will recognize that query? So it is just a part of like natural language processing, but this at that time system will recognize the human being, the sounds of the human being as phonetics. So the sound which is basically used by human being to communicate with the system or with another person, so that thing is known as phonetics. Then after that, there is one more concept, that is morphological knowledge. It is very important part of NLU, that is natural language understanding. So it is just derived from the words of morphology. So morphology means what? How the words are constructed, what are how the words on the basis of the natural language processing, it is basically used to identify, it is basically used to study the formation of the words. Means जो हम बात करते हैं उस बात के कॉन्टेक्स्ट में जो भी वर्ड्स यूज होता है, वो वर्ड्स कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं. सो दैट थिंग इज बेसिकली एनालाइज, दैट थिंग इज बेसिकली कम्स अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल नॉलेज. So suppose if I'm giving one example of morphological knowledge, so suppose if I'm considering one example, हमारे पास एक word है, if we are going to break that word into small parts, so it will also create another word. I'm just giving one example, handsome. Okay, this is a word, handsome. Okay, so suppose if I'm breaking this word, so it will create another word, and that word has some kind of meaning. हैंडसम मीन्स व्हाट? हैंडसम हमारे पास एक वर्ड है, जब मैं उस वर्ड को ब्रेक कर रही हूँ, सो इट विल क्रिएट अनदर वर्ड, हैंड प्लस सम. सो इन दैट सिचुएशन हैंड हैज some different kind of meaning and some has some different kind of meaning. So this is the part of like morphological knowledge. So whenever user will talk with Google Assistants or like Alexa or Siri, so in that situation NLU is also already there. In that system NLU is already there, natural language understanding system is already there. So system will break each and every word. Suppose if I'm asking what is
morphological knowledge. If I'm asking this question to Google Assistant, so Google Assistant will break, means the NLU, that means the natural language understanding system will break each and every part of the words, and then after that it will try to find out the concept of that word, it will try to find out the meaning of that word. So this is a part of like morphological knowledge. So once we are working with the concept of natural language processing, so there will be n number of words, there will be different very large amount of word, and each word has different kinds of meaning. So we need to break each and every word so that we can signify important meaning of that word. Suppose I've just given one example, that is handsome. So suppose if I'm breaking that word handsome, so it will create hand and some. So these two words have different meaning. Again, I'm giving another example, unsuccessful. So this is a word, unsuccessful. Okay, so once I will break that word, so there will be three words, un, then after success, and then after full. So these are the different kinds of words. So each and every word has different meaning. Suppose if I'm breaking unsuccessful, so each and every word, each and every small word has different kinds of meaning, and that would be that may create some kind of specific meaning in other, in different context. So this is a part of like morphological knowledge. So जब भी हम NLP के concept में काम करेंगे, because we are working with the human language processing, हम अभी जो काम कर रहे हैं, अभी जो हमारा काम चल रहा है, वो हमारा पूरा काम किस पे चल रहा है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे। और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो ह्यूमन बीइंग अपने डेली डे टू डे वर्क लाइफ में या फिर अपने लिविंग लाइफ में जो वो यूज कर रहे हैं, वही हमारा ह्यूमन लैंग्वेज है. So system needs to understand that language. If you are going to ask any query with Google Assistant in Hindi, so Google Assistant is ready to answer that question, because inside the Google Assistant there is some kind of natural language understanding, there is some kind of natural language system which is basically convert that the Hindi word into different kinds of Hindi word into different like processing, means it will convert that word into processing terms, and then after that it will get the data from the database, and finally it will revert back to the user with the results. So this is the terms which is basically used by the NLS, that is natural language system. And inside that we have different kind of language, inside that we have morphological knowledge, because this knowledge is required to break the it is basically used to require to break the words into different formats, so that we can analyze the concept of the words, so that it will be easy for us to process the text data. Next is syntactical knowledge. It is also mandatory in natural language understanding, because in syntactical language we are just going to put together to correct sentences. We are just going to deal with words that can be put together to form correct sentences. So what will be the example of syntactical knowledge? Suppose if I'm giving one example, I'm just going to mention first example. School went to the boy. Is this sentence is correct or not? School went to the boy. Is this sentence is correct or not? No, ma'am. No, ma'am. Okay. So again, I'm mentioning another sentence. The boy went to the school. Boy went to the school. Is this sentence is correct? Yes. Yes, ma'am. Yes. So this Yes, is ma'am. basically analyzed by the syntactic knowledge. Syntactic knowledge is present inside natural language understanding. Once we are going to understand the human language, so we don't know, because हर किसी की verbal communication इतनी अच्छी नहीं होती है. अगर Google Assistant से वो query कर रहा है, so Google Assistant will not understand the concept of, like, it will not that system has no any idea about the communication skill of that person, those who have asked query with the Google Assistant. तो उस situation में क्या होगा कि syntactic knowledge को use किया जाएगा. Syntactic knowledge क्या होता है कि वर्ड का जो हमने जो एक सेंटेंस बनाया, उसमें जो हमने वर्ड्स यूज किया है, क्या वो प्रॉपर वे में है,
और अगर वो प्रॉपर वे में है देन वी विल प्रोसेस दैट वर्ड. ये कौन काम करेगा? ये नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की जो सिस्टम होंगे वो काम करेंगे, ना कि जो यूजर्स हैं वो काम करेंगे. ये सारा सिस्टम पे ही काम हो रहा है. ये जितनी सारी चीजें होंगी ये सिस्टम में ही काम होगी. सो जब भी कोई यूजर अगर गलत भी वर्ड बोल रहा है तो सिस्टम विल रिकॉग्नाइज दैट वर्ड एंड देन आफ्टर दैट सिस्टम विल revert back to the user with the result of the query. So this is the syntactical knowledge. So this thing is also present inside the natural language understanding. Again, I am focusing on next concept, that is semantic knowledge. Semantic knowledge is what? That is basically concerned with the words and sentence. So semantic knowledge is what? Which is basically concerned with the words and sentences. So inside semantic language, we don't need to focus on only word, but also on sentence. Sometimes we, because earlier I have mentioned one thing, na, phonetics and phonology. So inside the, yeah, for morphology. So in this, we need to focus on words, the words which we are going to use, like handsome. So I have mentioned word handsome. तो ये handsome word पे फोकस कर रहा है और इसको ये ब्रेक कर रहा है, मतलब ये एक एक वर्ड को फोकस कर रहा है. बट इनसाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेंटिक नॉलेज, it is not only used to focus on the words, it is basically used to focus on the sentence. So in this situation, we don't need to focus only on word but also on sentence. Okay, so suppose if I'm giving one example, bank, 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 I'm just mentioning one word. So what do you understand about this concept, bank? There are two kinds of things, there are two kinds of possibility. Bank should be a river, एक रिवर का भी बैंक होता है, और एक जो जहाँ पे आप मनी ट्रांजेक्शन करते हो, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज बैंक, है ना? Yes, ma'am. ओके, सो हाउ सिस्टम विल अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट. मैंने पहले भी आपको बोला है कि जब भी आप सिस्टम से बात कर रहे हो, जब भी आप सिस्टम को कम्युनिकेट कर रहे हो, सिस्टम को पता ही नहीं है कि जो यूजर है उसका वर्बल कम्युनिकेशन कैसा है, या जो भी या फिर जो भी यूजर हैं जो सिस्टम को क्वेरी कर रहे हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है. सो इन दैट सिचुएशन सिस्टम को ही एनालाइज करना है कि जो यूजर ने क्वेश्चंस करे हैं, जो यूजर ने क्वेरी करे हैं, उस क्वेरी में हमको क्या क्या चीज को फोकस करना है. पहले हम साउंड को फोकस किया, फिर हमने वर्ड्स को फोकस किया, फिर हमने क्या किया, करेक्ट सेंटेंस के फॉर्मेट को फोकस किया. देन आफ्टर दैट वी आर वर्किंग विद सिमेंटिक नॉलेज एंड हियर वी विल एनालाइज व्हाट. हम यहाँ पे क्या एनालाइज करेंगे? नॉट इवन वर्ड्स बट ऑल्सो सेंटेंस. हमको दोनों पे काम करना होगा, वर्ड्स पे भी काम करना होगा और सेंटेंस पे भी काम करना होगा. सो अगर मैंने बैंक यूज किया है मनी ट्रांजेक्शन के लिए, तो क्या होगा कि अगर कोई मनी रिलेवेंट कुछ अगर ऐसा वर्ड आता है बैंक के एक सेंटेंस, मैंने एक सेंटेंस मेंशन किया और उस सेंटेंस में मैंने को मान के चलो मैंने एक सेंटेंस मेंशन किया, आई हैव टू विजिट माय बैंक टू परफॉर्म सम काइंड ऑफ मनी ट्रांजेक्शन. सो दिस बैंक शुड बी अ मनी ट्रांजेक्शन बैंक. ये क्या होगा? ये मनी ट्रांजेक्शन बैंक होगा. वैसे अगर रिवर की बात करती हूँ, रिवर बैंक की, रिवर का जो क्या बोलते हैं एंडिंग पॉइंट्स जो होते हैं, लाइक वी कैन कॉल इट एज बैंक, तो वहां पे फिर मुझे उस टाइप रिवर के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी होगी, तो मुझे वहां पे उस सेंटेंस को पूरा फोकस करना होगा. ऐसा भी होता है कि एक ही वर्ड दो जगह पे मेंशन होते हैं बट दोनों की मीनिंग उसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग अलग होती है. सो इन सिंटेक्स in semantic knowledge, we need to focus on both the things, words as well as sentence. We need to focus on both the things. If we are getting bank, so we need to analyze the entire sentence कि ये जो bank word mention किया गया है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस में किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है. क्या ये रिवर के बैंक को एनालाइज कर रहा है या मनी ट्रांजेक्शन रेलिवेंट बैंक को एनालाइज कर रहा है, उसको सिग्निफाई कर रहा है जनरली. सो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? सिमेंटिक नॉलेज के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे. The next is pragmatic knowledge. It is a very important part in natural language understanding, because in pragmatic knowledge we have it is just an extension of semantic knowledge. Why? Because it is basically used to deal with the meaning of the words where it has been used. How sentences are used in different situations, how we can use a sentence in different situations. So suppose if I mention I went to bank to take money,
I've already mentioned that thing na. So pragmatic knowledge is also used to concern how sentences are used in different situations. एक ही sentence को आप different situations में कैसे mention कर सकते हो, तो ये आपका किसमें आ जाएगा, pragmatic knowledge में. ठीक है. I went to the bank. तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आ रहा है कि आप कौन से बैंक में गए थे, रिवर के बैंक की बात कर रहे हो या यहाँ पे आप मनी ट्रांजेक्शन रेलिवेंट बैंक की बात कर रहे हो. बट अगर मैंने यहाँ पे मनी का एक वर्ड मेंशन कर दिया कि आई वेंट टू बैंक टू टेक मनी, सो इन दैट सिचुएशन वी विल एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ money transactional bank, like that bank where we should perform some kind of money transactions, so we are just talking about that bank. Okay, so this is also part of like segmentic knowledge. So whenever user will perform this kind of like, whenever user will perform natural language processing concept, so user need to analyze all these things. System will also do the same thing, but you have to, because we are working with the concept of like natural language processing, so in that situation we need to analyze each and every concept. The last is second last is the discourse knowledge. Discourse knowledge is just it is basically concerned with the concept of connected sentence. So discourse knowledge is sometime we can call it as like, I'm just giving one example. Discourse knowledge is concerned with the कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक, इफ वी सपोज हम लोग अगर एक बार, अगर मैं आपको एक पैराग्राफ देती हूँ तो आप 4-5 लाइन पढ़ने के बाद आप उसका नेक्स्ट सिनेरियो प्रेडिक्ट कर लेते हो कि नेक्स्ट में जो ये मैं पैराग्राफ पढ़ रही हूँ या ये जो मेरे को एक सेंटेंस या एक कंटेंट जो मुझे मिला है इसके नेक्स्ट में क्या होगा. सो दैट इज पार्ट ऑफ लाइक डिस्कोर्स नॉलेज, because it is basically concerned with the concept that intersentential links, that is how the immediately preceding sentence affect the interpretation of the next sentence. जो previously occurred या previously जो भी sentence हमने use किया है उस basis पे हम जो next sentence होगा उसका हम एक interpretation create कर सकते हैं. Suppose if I am giving one example, Ram went to the market and he bought some mangoes. Okay, so just listen it carefully. Ram went to the market. Ram went to the market, and in another sentence I have mentioned, and he bought some mangoes. So here he is basically used in context with Ram. यहाँ पे जो ही एक वर्ड यूज हुआ है वो किसके कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज हुआ है, राम के लिए. क्यों? क्योंकि राम को हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर दिया है अपने सेंटेंस में या अपने पैराग्राफ में. सो in that situation we can call it as like he, not even Ram again. So this is the concept of discourse knowledge. जो हमने पहले चीजें पढ़ ली है या हमने जो पहले चीजें मेंशन कर ली है, on the basis of that thing we can also analyze the next sentence. We can also interpret the next sentence on the basis of the previously mentioned sentence. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, now the last thing that is very important part in natural language processing, natural language understanding, world knowledge. Now it is just a part of like world knowledge. Why we need world knowledge in natural language understanding? Because it includes the general knowledge about the structure of the world, means what each language user must know about the other users beliefs and goals. एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि आप अगर ह्यूमन बीइंग हो तो आपको पता होगा कि हर एक ह्यूमन बीइंग की बिहेवियर कैसी होती है, आपको बिहेवियर काइंड पता होगा, लाइक और भी उनके गोल क्या हो सकते हैं, वो कैसी बातों पे बिलीव करेंगे. मतलब हम अगर ह्यूमन बीइंग है सो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द अदर पर्सन्स बिलीव्स एंड देयर गोल्स. सो दिस इज पार्ट ऑफ लाइक वर्ल्ड नॉलेज. क्यों इसको वर्ल्ड नॉलेज बोला जा रहा है कि हम लोग के अराउंड जितने लोग हैं, जितने ह्यूमन बीइंग हैं, वी कैन इजीली आइडेंटिफाई देयर बिलीव्स and their goals. This is also mandatory for natural language understanding. अगर कोई ह्यूमन बीइंग, जैसे कि सिस्टम से आप क्वेरी कर रहे हो ना, यहाँ पे तो आप ह्यूमन बीइंग से क्वेरी नहीं कर रहे हो कि उसको पता होगा, उसके पास कुछ इमोशंस होंगे. वहां तो सिस्टम है, सिस्टम को कोई इमोशन नहीं पता है.
जब यूजर कुछ ऐसा सर्च कर रहा है, लाइक मुझे कोई ऐसे क्वेरी में सर्च कर रही हूँ, तो मुझे उसके रेलिवेंट कैसे डिटेल्स आ जा रहे हैं, या सिस्टम मुझे कैसे सजेस्ट कर दे रहा है, या ये फिर उसके रेलिवेंट कुछ ऐसी चीजें, अनएक्सपेक्टेड चीजें हमें क्यों मिल जाती है. सो दैट इज पार्ट ऑफ लाइक वर्ल्ड नॉलेज. जब भी कोई नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे काम होता है, जब भी कोई नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस किया जाता है, उस सिचुएशन में क्या होती है कि जो जनरल नॉलेज होता है, किसी भी टर्म की बात करो, किसी भी टर्म की, अगर मैं सिंपल सा अगर मैंगो टाइप की बात कर रही हूँ, टाइप्स ऑफ मैंगो, सो यू आर एबल टू सी ऑल द टाइप्स ऑफ मैंगोज विद देयर कलर्स, विद देयर फीचर्स, विद देयर फंक्शनैलिटी, सॉरी, विद देयर like specification. So each and everything is mentioned. So how this thing is possible? This thing is possible by world knowledge, because in today's scenario, एज अ ह्यूमन बीइंग हम क्या करते हैं, हम दूसरे लोगों के बिलीफ्स और दूसरे लोगों के गोल्स को, क्योंकि ये सबका होता है, इवन हमारा भी है, दूसरा हमारे सामने जो दूसरा पर्सन बैठा है उसका भी कुछ बिलीफ्स होगा, उसका भी कुछ गोल्स होगा. सो ईच एंड एवरी पर्सन हैज डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिलीफ्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ गोल्स, एंड दैट थिंग इज आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग. Okay, so these are the things which is basically comes under the concept of natural language understanding. These all things are very important in natural language understanding. So whenever we are asking, अब मैं इन सब चीजों को एक एप्लीकेशन पेजेस पे आपको समझा देती हूँ कि जो हम लोग बात कर रहे हैं एलेक्सा सीरी, वो तो एक सिस्टम है, उसको किसी ह्यूमन की इमोशन, ह्यूमन का नेचर, किसी भी ह्यूमन का मूड कुछ भी नहीं पता है. वो कैसे डेटा प्रोसेस कर रहा है, फोनोटिक्स पे काम कर रहा है. फोनोटिक्स मींस क्या, कि जो जब किसी भी यूजर का साउंड आ रहा है, जब किसी भी ह्यूमन बीइंग का साउंड आ रहा है, तो वो उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है. देन आफ्टर दैट मॉर्फोलॉजिकल नॉलेज पे काम कर रहा है. मॉर्फोलॉजिकल नॉलेज क्या हो रहा है, जो वर्ड्स हो रहे हैं, जो सेंटेंस आ रहे हैं, जो फ्रेजेस आ रहे हैं, जो क्लाउड्स आ रहे हैं, वो हर एक चीज पे काम कर रहा है. देन आफ्टर दैट क्या हो रहा है, अगर मैं बात करूं कि जो वर्ड्स आ रहे हैं उस पर वो कैसे काम, वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि जो वर्ड है उसको मैं किस कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहा हूँ. जैसे कि मान के चलो, मैंने आपको बोला था कि मॉर्फोलॉजिकल की बात की थी मैंने, तो मॉर्फोलॉजिकल में मैंने आपको बोला था हैंडसम, तो ये इस वर्ड को कैसे आइडेंटिफाई करा था, उसने ब्रेक किया, फिर उसका अलग अलग मीनिंग आइडेंटिफाई किया, और अगर उस सेम वर्ड का साथ में एक साथ ही उसने प्रोसेस किया, तो उसका उसने मीनिंग आइडेंटिफाई किया. क्योंकि ये ऑलरेडी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, इवन पाइथन में भी आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे वर्ड डिक्शनरी क्रिएटेड है, ऑलरेडी हमारा पाइथन में इम्प्लीमेंटेड है. पाइथन में जो हमारा वर्ड डिक्शनरी एनएलटीके में हमारा ऑलरेडी वर्ड डिक्शनरी प्रेजेंट है, एंड यू आर गोइंग टू एनालाइज डिफरेंट लाइक 3 to 4,000 वर्ड्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट देयर. ओके, इट इज ऑलरेडी देयर. सो वी आर गोइंग टू, यहाँ पे भी बैंक जो है वो कभी वर्ब की तरह काम कर रहा है, कभी एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, मतलब हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच पे वो काम कर रहा है. कहीं वो नाउन की तरह एक्ट करेगा किसी सिचुएशन में, ऑन द बेसिस लाइक हम जो सेंटेंस मेंशन कर रहे हैं ना, उस वर्ड्स, उस सेंटेंस में उस वर्ड का जो वे ऑफ लाइक प्रोसेसिंग है, या जो उसका नेचर है, वो चीज एनालाइज हो जा रहा है, एंड दैट थिंग इज पॉसिबल बाय मॉर्फोलॉजिकल. अगेन सिंथेटिकल नॉलेज में क्या हो रहा है हमारा, कि जो वर्ड्स हम पुट कर रहे हैं वो प्रॉपर फॉर्मेट में है कि नहीं. जैसे मैंने मेंशन किया था कि स्कूल वेंट टू द बॉय, दिस इज नॉट द करेक्ट वे, बट व्हाट विल बी द करेक्ट वे, बॉय वेंट टू द स्कूल. सो दिस थिंग इज आल्सो प्रेजेंट टू, सपोज अगर कोई एलेक्सा या सीरी से क्वेरी कर रहा है, तो उसको पता है कि जो ह्यूमन है उसका कुछ ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन सिस्टम उसको कैसे इजीली आइडेंटिफाई, इवन आप भी कभी गूगल पे क्वेरी करोगे, तो अगर आप कुछ रॉन्ग चीजें मेंशन कर देते हो, सो गूगल विल सजेस्ट सम काइंड ऑफ लाइक, उसके लिए आपको करेक्ट रेक्टिफाइड या फिर जो करेक्ट डेटा होता है वो आपको सजेस्ट करता है, एंड दैट इज ओनली प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिकल नॉलेज. अगेन सिमेंटिकल नॉलेज में क्या हो रही है कि हमें जो वर्ड मिल रहे हैं उस वर्ड की क्या मीनिंग हो रही है, उस वर्ड की मीनिंग उस सेंटेंस पे हमको डिफाइन करनी है. जैसे मैंने बोला था, दो बैंक की बात की थी, बैंक वर्ड की, तो रिवर के कॉन्टेक्स्ट में अलग मीनिंग हो जाएगा, एंड हमारा मनी ट्रांजेक्शन के टर्म में उस बैंक की अलग मीनिंग हो जाएगी. सो दिस थिंग इज आल्सो प्रेजेंट इनसाइड NLU, that is natural language understanding. Again pragmatic knowledge की जरूरत है, क्योंकि semantic knowledge क्या कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ वर्ड पे फोकस कर रहा था. so now we need to focus on the sentence, not even word. हम वर्ड पे तो काम कर ही रहे हैं, वर्ड पे हमारा काम चल ही रहा है सिमेंटिक नॉलेज, लेकिन प्रैग्मेटिक नॉलेज में हमारा क्या हो रहा है, प्रैग्मेटिक नॉलेज में हम
वर्ड के साथ साथ सेंटेंस को भी फोकस कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला था कि मैंने अगर बैंक वर्ड मेंशन किया तो बैंक तो दो जगह पे काम कर रही है, एक रिवर के लिए भी काम कर रहा है और एक कहाँ पे काम कर रहा है, एक मनी ट्रांजेक्शन के लिए काम कर रहा है। फिर मैंने सेंटेंस को एनालाइज किया, सो सेंटेंस वाज लाइक दैट, आई वेंट टू बैंक टू टेक मनी। तो इस सिचुएशन आप कौन से बैंक की बात कर रहे हो, मनी ट्रांजेक्शन रिलेवेंट बैंक की बात कर रहे हो। डिस्कर्स नॉलेज भी हमारा सेम था, लाइक डिस्कर्स नॉलेज में क्या था कि हमें मतलब अपकमिंग इवेंट को आइडेंटिफाई हम इजीली कर सकते थे, या जो नेक्स्ट जो लैंग्वेज हो रहा था उस लैंग्वेज को इंटरप्रेट हम इजीली कर सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस लैंग्वेज। जैसे राम वेंट टू द मार्केट, या Ram went to market and he bought some mangoes. So here I have mentioned only he. So ऐसे ही हमारे साथ सिनेरियो होता है कि हम एक पैराग्राफ जब मेंशन करते हैं ना, सो सिस्टम विल इजीली, हम जब एक पैराग्राफ मेंशन करते हैं ना तो सिस्टम विल इजीली आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, सिस्टम विल इजीली आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट मींस कि जो हमने पैराग्राफ मेंशन किया उसकी अपकमिंग फ्रेजेस, उसकी अपकमिंग जो डेटा होगा वो क्या रहेगा, या अपकमिंग कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे। सो दिस थिंग इज analyzed with the concepts of discourse knowledge, again word knowledge, because जो चीजें हम मेंशन कर रहे हैं सिस्टम को, जो चीजें हमने नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग या नेचुरल लैंग्वेज सिस्टम को हमने दिया है, वो क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा जो वर्ल्ड नॉलेज है या फिर जो बेसिकली जो लोगों का बिलीव्स है। वर्ल्ड नॉलेज मतलब क्या कि हम लोग जितने लोग हैं सभी हम लोग एक वर्ल्ड में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हर किसी का क्या बिलीफ होगा, क्या गोल होगा, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि हर एक ह्यूमन बीइंग का ये प्रॉपर मतलब ये एक नॉर्मल सा नेचर है कि हर एक का कोई ना कोई एक डाउट होगा किसी चीज को लेकर, हर किसी का कोई एक गोल होगा, हर किसी का एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा। सो वी कैन एनालाइज ऑल दिस कॉन्सेप्ट विद वर्ल्ड नॉलेज। हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, वर्ल्ड नॉलेज। जो हम नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग सिस्टम बनाएंगे या जो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग सिस्टम होते हैं उसके पास ये सारे नॉलेज होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉलेज, ये जो जितने नॉलेज हम मेंशन कर रहे हैं, on the basis of this knowledge system will easily recognize your query। और इसी बेसिस पे आजकल एलेक्सा, सीरी, गूगल वॉइस असिस्टेंट ये सभी काम कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम को पता है कि यूजर ने जो डेटा मेंशन किया है उस डेटा के कॉन्टेक्स्ट में, उस डेटा के रेलिवेंट उसको कैसा रिजल्ट प्रोवाइड किया जाए, और उस बेसिस पे वो उसको रिजल्ट प्रोवाइड कर भी रहे हैं। So this is the entire concept of linguistic knowledge in natural language processing. So is there any query? So now you can ask your query. Ma'am, you have elaborated so well. No queries. Thank you. If anyone having any kind of query, so it's just a request, please ask your query, so it will be easy for you to understand the concept, because after one or two class, after next class I will proceed with Python programming. So it's just a request from all the participants to please use your laptop, so that it would be very useful for you to understand the concept. There is no any concept of like machine learning or deep learning. We don't need to put our data, we will just write a sentence, and then after that we will process that sentence, we will analyze the concept. Okay, so because in natural language processing we will basically focus on the concept of pre-processing. So pre-processing is just a part of like machine learning, where we are going to analyze, we are going to pre-process our data. Means the data, means we are collecting large amount of data, but all the data which we have collected, that data is not useful, so we need to rectify, we need to filter out some important data. हम उस डेटा को important डेटा को filter out करेंगे, and then we will proceed with the concept of Python programming. So it will be very important concept for you to understand the natural language processing with Python. So if any query, so feel free to ask me. Any special application for Python? No, it is already, because in Python each and every function and libraries and tags are already predefined there. So we don't need to, if you want to proceed with like Jupyter, so you can do it, but there is no any application except Python. So we are just working with the concept of Python. Each and everything is already defined there. Either it's machine learning, deep learning, or natural language processing, or any other transfer learning. So Python is
very important like programming language. It's a very useful programming language to process our data for all these things. Is there any query? No, ma'am. Okay. Okay, so the session for today's session is already completed. So we will continue next session in next class. So in next session we will discuss the pre-processing of natural language processing. What is the use of pre-processing? So in next session we will discuss that concept. What are the different techniques of pre-processing? There are different kinds of technique: lemmatization, POS, steaming, removal of words, so tagging. So these are the words. So before that we will analyze the basic concept, corpus, and what different kinds of things. So in next session we will, so next session will be more interesting, because inside that we will actually know the concept of natural language processing. Means how we, if we are going to uh, perform natural language processing concept, if we are going to analyze natural language processing concept, so whenever we will ask query to the system, so how system will analyze that data, how system will pre-process that data. हम जो query कर रहे हैं, गूगल हमें within 1 second हमें वो चीजें दिखा रहा है या हमें वो provide कर रहा है, but how is it possible, ये internally कैसे काम कर रहा है, we will understand that concept with the help of programming, Python programming. So today's session is already over. So it's just a request to